Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to my channel Chemistry with Sir Ihsan. Today I am going to tell you another very important topic in which students have a lot of problems. Although this topic is very easy if you try to understand. तो आज मैं आपको इंशाल्लाह इस डॉक्स रिएक्शन स्टार्ट करूंगा और इसमें जो है हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आज हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो है उनको हम हाईलाइट करेंगे और इस तरह हम स्लो एंड स्टडी रिडॉक्स रिएक्शन को दो या तीन लेसन्स में फिनिश कर देंगे। ओके जी, लेट्स स्टार्ट विद इट। First of all, I can tell you, right, redox reaction basically, as the name indicate, red ox in a chemical reaction in which reduction and oxidation takes place side by side. So before moving to the redox reactions, first, first of all, we need to understand what is the difference between reduction and oxidation. Today, my main focus is reduction and oxidation. चलें शुरू करते हैं जी, अल्लाह का नाम लेके। तो आ, आपके सामने जो है आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो पहले मैंने रिडक्शन को आप इंडिपेंडेंटली एक्सप्लेन किया है, ठीक है जी, और बाद में हमने ऑक्सीडेशन को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो यू कैन बी आस्क्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। और जो भी रिडॉक्स रिएक्शन होगा उसमें पहले आपको रिडक्शन बताना होगा, किस एलिमेंट की रिडक्शन हुई है और किस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हुई है। फिर हम आपको रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बताएंगे, फिर इनके टेस्ट्स के बारे में बताएंगे। तो प्लीज आप इन टच रहिए। और शुरू करने से पहले आप प्लीज मेरा चैनल जरा सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलें जी, शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। ओके जी, सो रिडक्शन हैज थ्री कॉन्सेप्ट्स। नंबर वन, reduction is the gain of electrons. You can see this, it is a gain of electrons. So the example is here. For example, chlorine atom, chlorine atom belongs to group 7. When it gain one electron, it will become chloride ion. So this is chloride ion. As chlorine atom has taken one electron and has converted into chloride ion. The formation of chloride ion is an example from chlorine atom is an example of reduction. Hope you understand. Okay. The second concept is loss of oxygen. When there is a gain of electron, which is reduction, similarly we have loss of oxygen here. You can see this. When zinc oxide reacts with carbon monoxide, it produces zinc and carbon dioxide. अगर हम स्टूडेंट्स अगर हम इसको देखें गौर से, जो जिंक ऑक्साइड है इसके साथ यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है। लेकिन जब प्रोडक्ट साइड पे जाते हैं तो ये Zn रह गए हमारे पास, मतलब ZnO ने अपनी ऑक्सीजन को लॉस कर दी है, ठीक है। और बल्कि लॉस नहीं किया, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसने इसकी ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ली है, ठीक है। वो ZnO ने क्योंकि ऑक्सीजन लॉस कर दी है और कार्बन मोनोऑक्साइड ने गेन कर दी है, तो हम कहेंगे जिंक ऑक्साइड जो है इसकी जो है ना रिडक्शन हुई है क्योंकि इसने ऑक्सीजन लॉस की है। एज आई टोल्ड यू, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। ओके, तो एट द सेम टाइम अगर आप देखते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट हुई है, तो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट आ जाएगा जहन में कि यार इसमें अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है जिंक ऑक्साइड की Zn की तरफ जाते हुए, क्योंकि इसने ऑक्सीजन लॉस की है, क्योंकि लॉस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिडक्शन होती है, तो एट द सेम टाइम कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसने ऑक्सीजन गेन की है। दैट मीन यू विल सी हियर गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो CO बेसिकली ऑक्सीडाइज हुई है। तो इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन. In this example, you have seen this.
ZnO has been oxidized into Zn by the loss of oxygen. Hope you understand. Let's move ahead. Gain of hydrogen. Gain of hydrogen is reduction. So let's see copper 2 oxide. Hope you understand. मैंने जो copper 2 oxide की बात की है, बेसिकली जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है. इट कैन बी +2, इट कैन बी +1, इवन +3 भी हो सकती है. तो कॉपर 2 ऑक्साइड, if I ask you what is the color of copper 2 oxide, most of you will make the wrong answer. Copper 2 oxide is basically a black powder. When copper 2 oxide react with hydrogen, hydrogen take out oxygen from copper 2 oxide, and it will be converted into copper and water. Now see, the formation of water is the result of gain of hydrogen. Hope you understand. So oxygen has gained hydrogen and it has been converted into H2O. So this is gain of hydrogen. So who has gained hydrogen? Oxygen has gained hydrogen. Copper 2 oxide has lost its oxygen. Hope you understand. So this is also an example of reduction. So reduction is basically loss of oxygen, gain of hydrogen. Hope you understand. If there is any confusion, please you can comment in my comment box in the channel. Inshallah, I will be helping you. Okay. Okay, then we have fourth concept, that is decrease in oxidation state. आपके जहन में आ रहा होगा कि what is oxidation state? Basically, oxidation state is the apparent charge. For example, मैं यहाँ पे लिखता हूँ Fe. See this, there is, Fe has no charge here. That means its oxidation state is 0. Its oxidation state is 0. If I write like this is the charge of Fe. This shows iron has oxidation state of +3. So basically, what is oxidation state? It is apparent charge on an element. What is oxidation state? I am repeating it again. Oxidation state is the apparent charge on an element. When there is no charge, that means its oxidation state is 0. Okay, let's summarize. What is reduction? So reduction is the gain of electrons, loss of oxygen, gain of hydrogen, decrease in oxidation state. You can see from this reaction. Here we have iron with charge 3, mean oxidation state 3. When it gain 1 electron, it will become Fe+2. You can see this. This is the oxidation state of iron after it has gained electron. Okay, here it was +3. So when we are moving toward, one shortcut for this is, when we are moving toward positive side, this is oxidation. I'm talking about oxidation and reduction in terms of loss and gain of electrons. When we move this way, this is oxidation. Like say this is positive side. This is, let's say, +1. Here it is 0. Sorry, -1. This is 0. So when we are moving from positive side toward negative side, this is reduction. We are gaining electron basically. Gain of electrons. So when we are moving from negative side toward positive side, we are losing electron. This is loss of electrons. This is oxidation. Hope you understand. If you have any confusion, please you can comment without any hesitation. I will be helping you, inshallah.
जैसे मैंने पहले आपको बताया कि पूरी कंप्लीट ओ लेवल की केमिस्ट्री और ए लेवल की केमिस्ट्री इंशाल्लाह विद पास पेपर्स, हर टॉपिक के अंदर जो पास पेपर में उसका क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, वो मैं बीच में हाईलाइट करता रहूंगा। और मेरे लेसन्स के बाद इंशाल्लाह आपको जब पास पेपर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो चीजें सर ने हमें पहले ही बताई हुई हैं, जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछी हुई हैं, और साथ जो भी आंसर हमारा होगा क्वेश्चंस का, वो जो प्रिंसिपल एग्जामिनर होता है CAI का, उसके रिकमेंडेड आंसर्स जो होती हैं उनको मैं फोकस करता हूँ। तो प्लीज रिमेन इन टच, आपका फायदा ही फायदा है इसमें। सिर्फ थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करें और आप अच्छा सा कमेंट कर दिया करें। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू एज वेल। अब थोड़ा सा मैं आपको ऑक्सीडेशन के बारे में भी बता दूं। आपके सामने ये ऑक्सीडेशन का भी लिखा हुआ मैंने आपके लिए, बस। और पहले मैं इसलिए लिख लेता हूँ ताकि मेरा टाइम सेव हो जाए, और जो कनेक्शन है राइटिंग और बोलने के बीच में वो मेंटेन रहे, ठीक है जी। सो totally opposite to reduction is oxidation. Loss of electron, you can see this. This here is the loss of electron. This loss of electron is known as oxidation. For example, potassium atom, potassium atom belongs to group 1. When it loses one electron, it will become potassium ion, and it has lost one electron. So why, metals has to lose electrons? Because their outer shell is less than half filled. Half means 4. So I'm talking about those elements with atomic number more than 9 or 10, 8, like this. Not lithium, hydrogen, or helium. Because these elements, they have to complete the duplet. Duplet means 2 electrons. First shell is completed by 2 electrons. ये आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ा होगा, नहीं तो इंशाल्लाह इस पे भी हम एक लेसन बना देंगे आप लोगों के लिए, ठीक है जी। तो फर्स्ट कंसेप्ट ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन वाज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखें Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन की है तो रिडक्शन हुई है, यहाँ पोटाशियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस की है तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। ये हो गया इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द डिफरेंस बिटवीन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। पहले हमने देखा ऊपर वाले में गेन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन, यहाँ पे लिखा है लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ओके जी। आप फोटोसिंथेसिस को देख लें अगर एग्जांपल को, स्पेस नहीं है यहाँ पे। फोटोसिंथेसिस बायो वाले बल्कि सब स्टूडेंट्स ने साइंस तो पढ़ी होगी। फोटोसिंथेसिस में अगर देखते हैं हम तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन को गेन करती है, ठीक है जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है, और जो वाटर होता है उसकी ऑक्सीडेशन होती है, क्योंकि उसकी हाइड्रोजन जो है वो लॉस हो जाती है और वाटर जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन। होप यू अंडरस्टैंड। सिमिलरली gain of oxygen, and like say this is a very common and important example. This reaction can be used how to uh, obtain zinc from its ore. ZnO is an ore. We will discuss this topic in detail when we will be talking about metals and how the metals are extracted by different methods. In this case, you can see zinc oxide when react with carbon monoxide, it produces carbon dioxide and Zn. Now, what happened to ZnO? You can see ZnO has lost its oxygen, while carbon monoxide has gained oxygen from zinc oxide. So, zinc oxide will be converted into Zn, and carbon monoxide will be converted into carbon dioxide. So, loss of oxygen has taken place from zinc oxide, while carbon monoxide has gained oxygen. So, what is happening when carbon monoxide is gaining oxygen? It is known as oxidation. At the same time, if you see Zn, it is losing oxygen. So the formation of zinc from zinc oxide is known as
reduction because there is a loss of oxygen here. Similarly, increase in oxidation state. In case of reduction, it was decrease in oxidation state, but here it is increase in oxidation state. So, for example, iron atom, as I told you here, iron atom is neutral here. When it loses one electron, its oxidation state will increase by one. So, loss of electron is known as oxidation. When we will combine oxidation and reduction reaction, it will be known as redox reaction. जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल मौजूद है ZnO से जब हम ZnO को जब रिएक्ट करवाते हैं हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ तो आप देख सकते हैं कि ZnO जो है वो Zn में कन्वर्ट होते हैं ये अपनी ZnO ऑक्सीजन लॉस कर देते हैं इसकी रिडक्शन होगी कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन गेन कर लेते हैं और इसकी जो है ऑक्सीडेशन होगी तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक टाइम पे ही चल रहे होते हैं उसको हमें रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं सो टुडे I have discussed what is the difference between oxidation and reduction. You understand? Please, if you have any problem, you don't get something, you can ask me through my channel. Uh, Inshallah, I will make your concept clear. My main focus is to make your concept clear. If your concepts are clear, then even without solving the past papers, you can get easily a star and above. You see, Allah Hafiz, thank you very much. Please do subscribe my channel and like and comment, please. Thank you very much.